जी सर। जी सर। ओके ओके सो आपके सीआर कौन है? हु इज द सीआर? जो अभी अगर चेंज होने हैं तो वो बाद में हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हु इज द सीआर? सर मीटिंग में नहीं है। ओके सो मेरा नाम काशिफ मुर्तज़ा है। आप लोगों ने वो देखा होगा डेट शीट वगैरह में, या जो भी वो टाइम टेबल शेयर किया उसमें लिखा हुआ था। मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने बीएस सीएस किया था यहीं से, पीयूसीआईटी से। स्प्रिंग 2003 का बैच था मेरा। और फिर मैंने लम से एमफिल किया, और अभी मैं यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसमें मैं काम करता रहता हूँ, या मुझे काम करना इंटरेस्टिंग लगता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इस तरह के एरियाज़ हैं। थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस भी मुझे अच्छा खासा पसंद है, और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स जो है वो मैं कोई आई मीन 6 7 8 दफ़ा या शायद इससे भी ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ पीयूसीआईटी में, जिसमें मैं एमएससी को भी पढ़ा चुका हूँ और बीएससी को भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। सो I've gone through this course several times, and now I have just a chance to have an interaction with you regarding this course. So that's my introduction. And अभी जो आपका शायद इससे पिछला बैच था उसको भी जो प्रीवियस बैच था उसको भी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मैं पढ़ा रहा था, लेकिन वो बीच में फिर कोविड की वजह से क्लासें हमारी उस तरह से, तब इतना पता भी नहीं था कि ऑनलाइन कैसे सारे। उसके बाद अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर्स और सारा कुछ चलना शुरू हो गया। लेकिन पिछले सेमेस्टर को भी आपका जो यानी F18 का बैच था उसको भी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मैंने ही पढ़ाया था, लेकिन वो कुछ कंटेंट्स हमने कवर किए थे, बाद में वो ज़्यादा कंटेंट्स हम कवर नहीं कर सके उसमें। तो अभी इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंशाल्लाह। ठीक है जी। So that's my introduction, and your introduction is that you are students of F19 MSCCS. Yes? Yes sir. Yes sir. Okay, great. Next thing about some norms of this class are चूँकि लेक्चर आप देख रहे हैं ऑनलाइन ही हो रहे हैं, और अभी कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि ये कब तक ऑन कैंपस होंगे अभी यानी इस तरह का कोई क्लियर नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास में चूँकि हम ये गूगल मीट पे क्लास लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग एडिड होते हैं, और वो तो एक तो आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, और आपको इसका खासा अंदाज़ा होगा कि अगर मल्टीपल लोग जो हैं वो एक ही वक्त में बोलना शुरू हो जाएं तो दे क्रिएट अ नॉइज़, एंड वो नॉइज़ को हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप क्वेश्चंस ज़रूर करें, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना वो सीक्वेंस में करें। यानी ये आप खुद से आपस में कह लें कि कोऑर्डिनेशन आपकी क्लास की कोऑर्डिनेशन इस तरह से हो कि अगर कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है तो दूसरा स्टूडेंट अगर कोई सवाल करना चाहता है तो वो उसके सवाल के कंप्लीट होने का वेट करे। और अगर दो स्टूडेंट्स लेट से एक ही वक्त में बोलना शुरू हो जाते हैं तो उनमें से कोई एक स्टूडेंट जो है वो अब वॉलंटरली बैकफुट पे चला जाए और एक स्टूडेंट को कंप्लीट करने दे और फिर दूसरा। इस तरह से सीक्वेंशली हम जो है वो सवालात को इंशाल्लाह आंसर भी कर सकेंगे और हमारी कम्युनिकेशन भी चलती रहेगी। अगर हम मुसलसल उसको वो रखेंगे सारे लोग बैक वक्त बोलना शुरू हो जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ ये। दूसरा, अक्सर औकात की चूँकि इंटरनेट है ये कभी अप डाउन हो जाती है, अक्सर औकात कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, मेरी तरफ से भी हो सकता है यहाँ पे भी। ऑल्दो कि मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ जो लैंडलाइन पे कनेक्टेड हूँ, जो बेस्ट इंटरनेट हो सकती है इस वक्त मैं वहाँ पे हूँ, लेकिन इवन देन ये चीज़ें होती हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर भी होती रहती हैं।
सो इट इज़ पॉसिबल कि मैं लेक्चर दे ही जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि कनेक्शन जो है लॉस्ट हो गया। तो उस केस में अगर आप मुझे मैसेज दे सकें कि सर आवाज़ नहीं आ रही या connection lost हो गया, तो we can wait and see when the things get stable and we can then resume everything. So और तीसरा ये कि जब मैं आपसे पूछता रहूँ बार बार कि ये चीज़ समझ में आई या नहीं, then keep on interacting with me so that I know that you are there and the connection is not lost. For example, उसके लिए बेहतरीन होता है कि CR जो है, ये कोई एक स्टूडेंट जो है वो कीप इन टच कि यस सर समझ आ गई है या वगैरह वगैरह। और अगर समझ नहीं आई तो ऑब्वियसली जिसको समझ नहीं आई वो सवाल कर सकता है। ठीक है जी? यस जी सर। ओके ग्रेट। और चीज़ें कुछ ये कि ये जितने भी लेक्चर्स होंगे ये सारे रिकॉर्डेड होंगे, तमाम लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे और यानी ये जो सेशन है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह हाई क्वालिटी की रिकॉर्डिंग्स होंगी, उसमें वॉइस का इशू नहीं होगा। जो डिस्प्ले बोर्ड है उस पर राइटिंग्स वगैरह के इशू नहीं होंगे, वो काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। यानी अगर वो आप बाद में भी जाके लेना चाहें, रेफर बैक करना चाहें, द रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल। Having said that, a lot of students they just join the meetings, and and the goal of several students is not to attend the lecture but to get their attendance marked. For those students, the good news is I will not be marking attendance. So if you don't want to join, or if you want to join just for attendance, you are free. I mean, do whatever you want. But there may be surprise quizzes off and on, and surprise quizzes will be in the form of a Google form. I may be, for example, in the middle of some class, maybe I give you link of the Google form, which is MCQs based test or something like that, and you have to fill that test maybe in 15 minutes or 10 minutes or so. So there may be surprise quizzes. Because they are surprise quizzes, there is no announcement when they will happen. So yeah, and the lectures are recorded. अगर किसी वजह से कोई एक स्टूडेंट किसी एक क्लास में किसी भी इमरजेंसी या किसी भी वजह से वो नहीं अपीयर हो सकता, तो वो लेक्चर बाद में सुन सकता है, डाउनलोड कर सकता है, एवरीथिंग। सही है? शुक्रिया। जी सर। ओके। दूसरा मुझे ये बताएं कि ऑल्दो दिस इज द फर्स्ट क्लास बट आई वांट टू सेट दिस इन द वेरी फर्स्ट क्लास, it seems redundant to record two sessions exactly the same way. So as long as the lectures are going online, जब तक ये ऑनलाइन चलते हैं, I'm planning to combine morning and afternoon session in a particular time so that we have one class, one recordings till the online sessions. जब ये physical face-to-face class शुरू हो जाएगी, then we will be obviously taking the classes in separate sections. So will it be feasible for you to take the class at afternoon time from the next class? For example, वालों को हमारे साथ कर ले ज्वाइन। I will ask them कि अगर वो 11:30 बजे आ सकें, और अगर बिलफर्स आपको 2:30 बजे वहां पे करना पड़े तो will it be feasible for you or will that be लास्ट very सेमेस्टर hard? में भी लास्ट सेमेस्टर में भी जो था ना, आफ्टरनून वाले हमारे साथ आए थे। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, प्लीज दोबारा बताइएगा। सर लास्ट सेमेस्टर में भी ना आफ्टरनून वाले हमारे साथ आ गए थे, जस्ट हो गए थे। नहीं, दैट्स फाइन। आई मीन मैं कह दूंगा कि वो आपके पास आ जाएं, यानी कि 11:30 बजे आ जाएं, दैट्स फाइन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोगों के एयर ड्रॉप के मसले हैं और वो उनके लेक्चर क्लैशेस आ रहे हैं एंड सो ऑन, और उनके लिए इस टाइम पे आना अगर किसी भी वजह से मुश्किल हो, तो विल दैट बी पॉसिबल कि आप उधर जाएं? पहली प्रायोरिटी तो यही होगी कि वो इधर आ जाएंगे 11:30 बजे। अगर वो 11:30 बजे नहीं आ सकते तो इज दैट पॉसिबल फॉर यू कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू गो एट 2:30, और आर देयर प्रॉब्लम्स? सर यहाँ हमारी क्लास में भी काफी बच्चों के एड ड्रॉप्स के हैं, तो उनका क्लैश आ जाता है, और कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं सेकंड टाइम, तो ठीक वो है, प्रॉब्लम हो जाती है ठीक आफ्टरनून है, में। ठीक है। सो ज्यादा फिजिबल ये है कि आफ्टरनून वाले अगर लेट से अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो 11:30 बजे ज्वाइन कर लें। सो आई विल आस्क देम फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, मे बी वी विल बी हैविंग अ कंबाइंड सेशन इंशाल्लाह। सही है। एनीथिंग एल्स और शुड वी कंटिन्यू? Should we start the lectures?
Anything from No, your sir, side? start lecture, sir. Sorry? कुछ नहीं सर, लेक्चर स्टार्ट कर दो। अच्छा ठीक है, चलें जी, मैं लेक्चर शुरू करता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं और उस सवाल से फिर हम डिस्कशन करते हैं और आगे कोशिश करते हैं चलने की। आप में से अक्सर लोग जो हैं वो बल्कि almost all of you have programming experience now, maybe in C++ or some language. You have coded, you have written down some programs to solve particular problems. So you now have, I am assuming you now have some experience of programming languages, coding in certain programming languages. Is that true? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So then if you, for example, understand a particular programming language very, very well, and you can solve any problem, maybe in C++ or some language, then my question is, why do you need to learn algorithm analysis? I have not told you anything about this course. Just a look and feel is that this course will tell you that a particular program will take how much time when it will run on a particular computer. Or whatever the computer is, the running time of this particular program, the total amount of time units it will take on an input will not be smaller than this, or it will not be larger than this particular time. So there will be bounds. It will take minimum this much time, maximum this much time, depending upon the size of the input. More or less, this is the goal of this course, more or less. Analyzing the programs without running the programs. हमने प्रोग्राम को रन करके, कंप्यूटर के ऊपर रन करके उसका रनिंग टाइम नोट नहीं करना। हमने प्रोग्राम को, बल्कि उस प्रोग्राम को भी हम एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखेंगे, या यूं समझ लें कि थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्टली लिखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिंटैक्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा कैजुअल लिख देंगे। दैट इज, यू कैन कॉल इट एज अ सूडो कोड, उस फॉर्म में लिख देंगे। और फिर देखेंगे कि जब कभी ये कंप्यूटर पे चलेगा या किसी भी कंप्यूटेशनल मशीन पे चलेगा, तो इट विल टेक हाउ मच टाइम। और भी कंसर्न्स हैं, इट विल टेक हाउ मच मेमोरी, इसको पैरेलल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, एंड सो ऑन। बट आवर कोर फोकस विल बी ऑन कंप्यूटेशनल टाइम। माय क्वेश्चन इज, व्हाई टू फोकस ऑन लर्निंग द एनालिसिस स्किल्स, कि एक प्रोग्राम जो है वो जब चलेगा कितना टाइम लेगा, ये स्किल सेट बनाना क्यों जरूरी है? आई मीन, सर एक प्रोग्राम अगर ज्यादा स्पीडली जो है ना काम हमारा परफॉर्म करा, और वही किसी और ने प्रोग्राम दिया वो स्लोली वो काम करे, हम लोग प्रीफर करेंगे जो काम जल्दी परफॉर्म करा और एफिशिएंटली परफॉर्म करा। ठीक है। So preference would be कि we will analyze the program and maybe compare multiple programs that solve the same problem and pick the one that is most efficient. या अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है या डिजाइन किया है और हमें लगता है कि वी कैन इम्प्रूव इट, तो वी इम्प्रूव इट, एंड हमें फिर लगता है कि वी कैन इम्प्रूव इट बाय अप्लाइंग सम लॉजिक इन इट, वी इम्प्रूव दैट अगेन, एंड मे बी वी कम अप with a most efficient program before deploying the actual code. So if the analysis of the problem or the code is leading you towards improving the or making the program more efficient, then I would say, why don't you purchase a fancy hardware, a better computer, for example, a computer that has a big RAM, big cache, high processing power, and very powerful computer. Let's call it supercomputer. Why don't you purchase that?
and make your program efficient at the end of the day. Why you need to focus on the code? I mean, do whatever the code, do some problem, write some code that is correct, maybe certain inefficient code, but then use a very fast hardware and speed up everything. Why don't you focus on the code and not the hardware? सर कॉस्टली हो जाएगा वो तो। सर हार्डवेयर काफी महंगा होता है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सर हार्डवेयर जितना भी अच्छा होगा वो उन लाइंस ऑफ कोड पे ही वर्क करेगा ना जो हमने लिखे हुए हैं, तो अगर वो ही इतने एफिशिएंट नहीं होंगे तो फिर काम सही नहीं होगा। लेकिन देखिए ना, कोड को एफिशिएंट करने के लिए लोगों के कई दफ़ा महीने लग जाते हैं और कई दफ़ा साल भी लग जाते हैं। नई लाइब्रेरी आती है जो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट होती है, 2-2 साल लग जाते हैं उसको इम्प्रूव करने में, और कई दफ़ा वो इम्प्रूव होता नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बजट लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। आपके भी ये 6 महीने लग जाने हैं ये सीखने में, और अब ये सीखने के बाद भी आपको एक मुनासिब सी चीज़ सीख के बाहर निकलेंगे तो हार्डवेयर पे तो निस्बतन थोड़े पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, और वन टाइम कॉस्ट होगी। एक दफ़ा एक अच्छा हार्डवेयर ले लें, माड़ा सा फजूल सा प्रोग्राम उस पर चलाएं, बड़ा तेज़ चलेगा क्योंकि हार्डवेयर बहुत तेज़ है। सॉफ्टवेयर को तेज़ करना या प्रोग्राम को तेज़ करना इज़ अ हेल ऑफ अ टास्क। काफ़ी मुश्किल टास्क है। कई दफ़ा बहुत हिलेरियस किस्म की लॉजिक लगा के भी वो कई दफ़ा वो इम्प्रूव नहीं हो रहा होता, और कई दफ़ा बड़ा माइनर इम्प्रूव होता है, और कई दफ़ा इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ time and budget to get the program improved. I would say, why don't you go to another solution? For example, why don't you purchase a hardware that is less costly than upgrading a software? Upgradation of a software may be very, very costly, both in terms of time and money, both. सर क्योंकि अगर हमने एक टाइम पे हार्डवेयर परचेज कर लिया तो एक टाइम पीरियड आएगा, हम कहेंगे कि ये इससे और स्पीड अप होना चाहिए ये टास्क, तो फिर हम नया हार्डवेयर परचेज करते रहेंगे, इस तरह ये लूप चलता रहेगा। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करते हैं तो चाहे जितना मुझे टाइम लगता है, लेकिन अगर हम एक दफ़ा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम भी सॉफ्टवेयर ही ऑप्टिमाइज करेंगे, और वो कम से कम मुनासिब मशीन पे भी अच्छा चल जाएगा। So यही मैं कह रहा था कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन can take much more time and much more cost consequently. और अगर आपने iteratively सॉफ्टवेयर को improve करते रहना है, so it will be more costly than improving the hardware iteratively. सर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें तो हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ही अपडेट कर सकते हैं, बट अगर हम हार्डवेयर की सेंस में बात करें तो जब हमारे रिसोर्सेज फिलअप हो जाएंगे तो फिर हमें उसको बिल्कुल एक तरह से हमें उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि हम अपना सॉफ्टवेयर ही अपडेट करें और अपना एल्गो इस तरीके से बनाएं कि वो ये एफिशिएंट काम करे। बेटे देखे ना, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, और जो बंदा इसको अपडेट कर रहा होगा उसकी सैलरीज और उसकी रिसर्च लेवल, और वो इम्प्रूव करेगा किन किन स्किल सेट्स को अप्लाई करने के लिए, वो फिर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करेगा, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक टीम होगी, वो 6 महीने उस पर काम करेगी, उन सब की सैलरीज आपको देनी पड़ेंगी, और वो फाइनल एक API निकालेंगे, वो आपको देंगे, वो टेस्ट करेंगे उसको, एंड I mean there is a complete software improvement life cycle, एक पूरा और वो हार्डवेयर से ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। I mean बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है वो। सो हार्डवेयर को पूरा रिप्लेस कर देना लेट्स से 6 माह बाद, that may be less costly than getting software more efficient in the 6 months. और लेकिन सर उसमें भी एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है वो जो प्रोग्राम है वो इम्प्रूवेबल हो ही ना, वो 6 महीने के बाद पता चले कि यार ये तो इससे तेज नहीं हो सकता नो मैटर व्हाट। सो व्हाई डोंट यू गो टू अ बेटर सोल्यूशन दैट इज परचेजिंग अ रिलेटिवली वेल हार्डवेयर। कंपनी लेवल पे सोचें, कंपनी का बंदा है, उसके पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ डेटा है, उसने उस पर सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाना है या उसने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना होता है। एवरी मंथ वो सेल रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करता है और वो देखता है कि यार किस बंदे ने हमारी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज किया है, तो वो उसने गिफ्ट हैम्पर्स देने होते हैं या कोई इनकरेजमेंट या कोई कस्टमाइज एड्स टू कीप दोज कस्टमर्स एंगेज्ड इन। और वो जो डेटा है वो आफ्टर एवरी मंथ लेट्स से वो डेटा मिलियंस में है, और वो सॉर्ट करने में या उसको अरेंज करने में लेट्स से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. He want a better algorithm to arrange the data, to sort the data. So why don't
why don't that person should go to purchase a better hardware that do that quickly rather than asking for software people that your algorithm is not working very efficiently, please improve it and stuff like that. सर अगर सपोज करें कि एक कंपनी में हेलो जी सर जो सॉफ्टवेयर होगा हमारा वो तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम करेंगे ना, लेकिन अगर हम हार्डवेयर को रिप्लेस करते हैं तो हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा सारों के लिए। जी आपने बताया जी, बताएं। बीच में कनेक्शन लॉस हो गया, सर हार्डवेयर दोबारा बताएंगे। सर हार्डवेयर ये एहतशाम अली, आप प्लीज पहले कंटिन्यू करें। एहतशाम अली, आप जरा दोबारा से। सर मैं ये कह रहा था कि अगर हमने सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करना है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो वो तो हमें एक मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर हमें हार्डवेयर को इम्प्रूव मतलब रिप्लेस करना है तो वो तो हमें उस हार्डवेयर में जितने भी मतलब और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इम्प्लॉयज उस हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं तो उन्हें सबके लिए रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट की कॉस्ट शायद ज्यादा होगी। डिपेंड्स अपॉन के सॉफ्टवेयर किस तरह का है और उसको इम्प्रूव, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। आपने देखे हैं कभी ये जो परचेज करने होते हैं सॉफ्टवेयर बड़े बड़े, खुसूसन ये बहुत जबरदस्त किस्म के, मिसाल के तौर पे मैटलैब है या और, अगर ये परचेज करने पड़े तो लग पता जाएगा ये कितने महंगे हैं। फिर इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस और हर महीने के, आई मीन सॉफ्टवेयर इज नॉट अ चीप थिंग, इट्स अ कॉस्टली थिंग। और उसके ऊपर जो भी इंप्रूवमेंट्स आप करेंगे दैट विल बी कॉस्टली, कॉन्सिक्वेंटली दैट विल बी कॉस्टली। आई मीन अगर मैं कंपनी ओनर हूं और मुझे एक पर्टिकुलर फाइनाइट सेट ऑफ हार्डवेयर अलर्ट से 5 या 10 कंप्यूटर्स हैं मेरे पास जो मेरे लिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो सॉल्व सही तरह नहीं कर पा रहे, जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम है या सॉफ्टवेयर उसकी बुनियाद पे, और मुझे एक सोल्यूशन लेट से ये मिलता है कि आई कैन परचेज द न्यू हार्डवेयर एंड लेट्स से दैट कॉस्ट मी टोटल लेट्स से 5 million or something like that, and that will start arranging the data very quickly. That may be less costly for me as compared to getting the software improved, and which may take 20 or 30 millions. Depends. So if the hardware, a fast hardware exists, then why do we need a software improvement? Why do we need efficiency? Why do we need to build the skill set? Because it is hard. I mean, it is very difficult. I mean, अभी आप जब कोर्स में चलेंगे देखेंगे, it's not that straightforward to get a program improved. There are a lot of smart tricks. People work for years and, I mean, came up with those tricks. It requires years, maybe years to come up with a very small improvement. Sometimes very quick, but sometimes it takes a lot of time. So my question is still there. What's the answer? सर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कह रहे हैं ना हार्डवेयर हम बाहर करें, अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक ही सॉफ्टवेयर यूज करती है तो हम हर ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रेफर करें कि वो हार्डवेयर चेंज कर ले, उससे अच्छा हम सॉफ्टवेयर को पहले बेटर बनाएंगे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सके। मैं ये कह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी जिसने वो सॉफ्टवेयर लेना है उसको। आप तो सॉफ्टवेयर इंप्रूव कर लेंगे अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, तो जिसने सॉफ्टवेयर की वो सर्विसेज लेनी है आपसे परचेज करना है, वो उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी, उसकी बहुत महंगा मिलेगा उसको। और अगर आप खुद ही सॉफ्टवेयर इंप्रूव करते हैं, आपका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है या आपने अपनी एक आईटी टीम बिठाई हुई है जो करिए, तो उसकी सैलरीज और वो सारा आपको अच्छी खासी कॉस्ट पड़ जाएगी। इट इज नॉट ईजी। 6 महीने के लिए अगर आप लेट से उस पर 40 लोग काम कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ सतह के लोग हैं, कोई मैनेजरियल लेवल पे है, कोई डेवलपमेंट लेवल पे है, कोई डिजाइन लेवल पे है, तो थिंक अबाउट कि कितना ज्यादा कॉस्टली है।
बट सर सॉफ्टवेयर तो एक ही दफा बनेगा ना, उसके बाद रीयूजेबल भी हो सकता है वो, बट हार्डवेयर नहीं होगा। पता नहीं 6-7 माह बाद, साल बाद पता लगे कि सॉफ्टवेयर अभी भी स्लो है और ज्यादा तेज चाहिए, पता नहीं। यस। सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमारे पीसी पे एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, फॉर एग्जांपल सुपर कंप्यूटर पे वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं। जब हम उसको क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट को तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसकी डिवाइस पे भी एफिशिएंटली रन हो सके। अब क्लाइंट को उसके लिए भी एक सुपर कंप्यूटर परचेज करना पड़ेगा, तो ये तो एफिशिएंट नहीं हुआ ना। अगर मैं फर्ज कर लूं कि हार्डवेयर सोल्यूशन इज वेरी क्विक, कि क्लाइंट को खपना नहीं पड़ता और वो बड़ा स्टेबल है और वो जल्दी से जाके एक नया कंप्यूटर ले आता है, यानी मेरा सवाल ये है कि लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेट्स से कि hardware cost is really negligible as compared to purchasing a new software or improving a software. Let's say in that phenomena, in that way, if we assume this, then the question is, then should you go for learning how to improve the software, or should you go to purchase the hardware? Let's put the question in this context. जी बेटे, आपकी आवाज नहीं मुझे क्लियर आई। ये हैं तस्मीना शफी। जी बेटे, दोबारा बताएं आप। सर बेसिकली आई थिंक कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के अच्छे होने पर हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती है, और ना ही सिर्फ हमारे हार्डवेयर के अच्छे होने पर सिस्टम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। आई थिंक दोनों चीज़ों का ही एफिशिएंट होना लाजमी होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास सुपर कंप्यूटर है, पर जो उसके ऊपर मैंने सिस्टम रन कर रही हूँ, अगर उसकी लॉजिक से इतनी फजूल किस्म की लगी हुई है, तो उससे एक तो ये होगा कि मेरे रिसोर्सेज फजूल में ही ज़ाया हो रहे होंगे, और मे बी शायद वो एफिशिएंट हो उस टाइम के लिए, बट बाद में हो सकता है कि वो एफिशिएंट ना रहे। तो डिपेंड दोनों चीज़ों पर ही करता है। लेकिन बेटे ये भी तो देखे ना कि अगर मुझे अभी एक प्रॉब्लम आई है कि मेरा ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है चाहे हार्डवेयर कंपोनेंट है, मैंने डिसीजन लेना उसको एफिशिएंट करने के लिए, मैंने उसको एफिशिएंट करना है। शुड आई move towards purchasing a better hardware, or should I move towards purchasing or let's say designing a new software, or should I go for both? Ideally though, I should go for both, but that may be completely expensive, very very expensive. Maybe ideally I should do that. If for example I have a choice to either improve a hardware or improve a software, and let's say the improvement of the software is costly, then improving a hardware seems a solution. My question is, will that work? Is that solution fine? Because अगर ये solution सही है तो हम ऐसे सिनेरियोस बिल्ड कर सकते हैं जिसमें पता लगेगा कि यार एल्गोरिथम को तेज करने की स्किल बिल्ड करना, इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है। सर शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज देखी जा सकती है कि आप हार्डवेयर को कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर रिवोल्यूशन कितनी देर तक होगा? एक टाइम पे तो आकर आपको सॉफ्टवेयर रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो लॉजिक्स लिखे हुए हैं, वो जो आपके पास न्यू टेक पड़ा हुआ है, उसके साथ एक टाइम पे आएगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज हो रहे होंगे, वो फुली आप उनको उसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसका यूज नहीं कर सकेंगे, तो ना आपको हार्डवेयर परचेज करने का इतना फायदा होगा। नहीं, वो एक टाइम कब आएगा? वो एक टाइम क्यों आ जाएगा? बस ठीक है, एक अच्छा हार्डवेयर ले आए आप, उस पर सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चल रहा है, आज अच्छा चल रहा है तो चलेगा आप कल भी। इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब किसी हार्डवेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ये भी तो चाहेंगे ना कि आप उसकी पूरी की पूरी पावर को यूज करें। नहीं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। मैं ये क्यों चाहूंगा कि इसकी कैशे की हर बिट यूटिलाइज हो रही हो? एज लॉन्ग एज माई प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, आई एम हैप्पी। बट सर फिर आप सर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनिशियली मेरा प्रॉब्लम साइज बहुत छोटा है। जैसे अगर हम किसी बैंक की बात कर लेते हैं, उनका प्रॉब्लम साइज इनिशियली छोटा है, मगर आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि उस बैंक के अंदर और कस्टमर्स आ जाएं और
हमारा प्रॉब्लम साइज इंक्रीज कर जाए, तो फिर उस केस में तो फिर मेरा हार्डवेयर भी मेरा साथ नहीं देगा। तो फिर यही होता है कि दोनों को ही एफिशिएंट बनाना चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को। Yes, that's the answer actually. Let me explain this answer because that's the true answer why we need a software. I'm going to show you now that no matter how better your hardware is, and no matter how cheap your hardware is, you need a software improvement. And I'm going to show you, and I'm going to explain the answer given by, I guess, Tasmina, Tasmia Shafi. So Tasmia Shafi have given an answer. She said, she mentioned the input size or the size. She mentioned the size of the problem, but I will transform that. I will change that word size of the problem to input size, and there we will see that no matter what, we have to focus on the software, even if it is too expensive. We have to go for software improvement. And what's the reason? That's the input size. And let me show you why. So here is can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So let's say, just for the sake of the argument, let's say I have a sorting algorithm. That actually sorting algorithm that actually is the following. So it accepts the input array of real numbers of size n. So let's say the input to this algorithm or the code or the program, whatever, is an array of real numbers. These real numbers might be the sale values or the product price or something. And n is the total number of purchases. So let's say you have an array of n numbers and you want to sort them. Let's say that's your problem. You want to sort them because let's say these real numbers, they represent the sale value, and you have n customers or maybe n sale records, and you want to find out the customers who are doing the maximum sales to give them some benefits to get them engaged, let's say. Now, if this is the input and you want to sort this particular input, let's say a very naive algorithm is maybe selection sort, maybe. What you do is write a code for every index I. Find minimum from I to n. Find the index. Find index of the minimum. That seems an algorithm. Yes? So what you can do is the following. So you, for example, have an array. Let me go through. Let me go through what I'm talking about, and then I will come back to the question. Let's say we have this array 2, 5, 1, -2, 0, and 7, and 1. That's an array
It has, the size is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Right now the size is 7. The total number of values are 7. So what you do is a very naive algorithm or a very basic thinking is that you find the minimum from index 1. So this is index 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. These are indices. So you go to index 1, and from index 1 to index 7, find out the minimum value. So for example, to find out the minimum value, you have to apply a for loop over the array. Yes? जी sir. And you find out that the minimum value is indexed at 4. I'm assuming that the array index starts from 1. Most of the programming languages, the array index starts from 0. So if you follow that convention, you start from 0 and do a little changes in your program. But there are a couple of programming languages in which the indices, they start from 1, like MATLAB, and there are others as well. But I mean, whatever way is convenient for you. In this course, I will be starting the array index from 1 rather than 0. If you want to start from 0, you can go in that way. I mean, that's not a big deal. This is just assuming index 0 or 1, starting index, whatever way. Okay? So you applied a for loop and you find out the minimum index at 4. So after finding out this minimum, you then swap the value at the first location and the value at the fourth location. So you swap them and you get an array of this kind. So -2, 5, 1, 2, 0, 7, and 1. Okay? And here we say now our index I goes here. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Now our index for each I, so first time the I was 1. So we did that. Now I incremented and we go to this thing. Yes? Make sense? Yes, sir. Now what you do, Yes, you find out the minimum from the index I to the last index. And you find out the index of the minimum. And the index you find out here is basically this one. So this is the index of the minimum. So what you do is you swap the two values, these two values, and the next array becomes like that. -2, 0, 1, 2, 5, 7, and 1. And now your I goes here. Make sense? Yes, sir. And you keep on doing this. And finally, once the I reaches to the last index, you are done and the problem is solved. Clear? Yes, sir. जी sir. So if we see what is happening in this whole code, and if we see that the major operation that is happening, the major operation is basically this swapping. That's one operation. And in this procedure, finding out the minimum, you are doing comparisons. For example, if I want to find out the minimum in an array, I will pick the first element, for example, and I will assume that this is the minimum. And then I will walk through or loop over the array, and I will say, oh, I will compare this value with every other value. And if any value found smaller than this, I will say, okay, that is my minimum, and I will keep walking until I exhaust all the array. And finally, I'll be having a minimum value. So finding out the minimum value requires comparisons. Yes? Yes, sir. So there are two core operations that are happening. Comparisons in finding out the minimum. And once I have found the minimum, another core operation that is happening is swapping. So
comparison cost, comparison and swapping. So let's say the cost of comparison on a particular machine, let's say Core i7 with 16 GB RAM and cache and all that support. Let's say if I want to compare to real numbers, let's say that takes on the processor level, let's say in C++ on Windows, let's say all that chain is specified. You have specified your hardware, you have specified your operating system, you have specified the language you are working in. And in all that setup, let's say comparing to real numbers together takes, let's say, 0.1 microseconds. Okay. Let's say this is the cost, 0.1 microseconds. Okay. One comparison, let's say, takes this much cost. And assume on the same setup, swapping two numbers together in an array, let's say, takes 0.01 microseconds. Yes? Yes, sir. Okay. Now let's analyze this program, how this program is working. When I is equal to 1, I have to do how many comparisons? I have to compare the first one with the second, first one with the third, first one with the fourth. I have to compare first one with all of the others. Yes? Yes, sir. So when I is equal to 1, I have to take, so this is, let's build a table. Let's build a table. That's the value of I, and that's the number of comparisons. That's the number of comparisons. If this is I, and that's the number of swaps that I need. Yes? Let's build this table. So when I is equal to 1, I have to find out the minimum, I have to apply almost n-1 comparison. 6. N-1 comparisons. In this particular case, 6, whatever the n is. Yes? And after all these comparisons, I have to do one swap. Yes? Yes, sir. Then the I moves to location 2. In that case, I have to do n-2 comparisons, and eventually I have to do one swap. Yes? Yes, sir. If I keep on moving, you can notice that as I goes to 1, 2, 3, down to, let's say, n minus, or let's say n-1, I goes to this thing. The comparisons and swaps, they move this way. n-1, n-2, n-3, down to 1. And the swaps are all 1, 1, 1, and all 1. Yes? Yes, sir. So the total cost that this algorithm takes is the total number of comparisons, all comparisons, and all swaps. Yes? Yes, sir. So let's see all comparisons. All comparisons, if I add this column, if you see, if I add this particular column, सर अगर हम जनरल करना चाहें तो ये n-i comparisons है. yes, yes, this is n-i, exactly. So let me first find out all possible comparisons that this program did. The total number of comparisons. Total number of comparisons. That is 1 plus 2 plus n-1. Yes? Itni hai जी na? सर. And that is equal to
n minus 1 into n over 2. Yes? अगर आप ये numbers को add करें 1 plus 2 plus 3 इन सारे numbers को add करें, that is the result. Do you know this result or not? Yes, sir. Does everybody know how to sum up these numbers? And the result is this. No, sir. Okay, so let me do it for you. So let's say 1. Excuse me, sir. Yes. सर ये जो आपने सीरीज बनाई है ये 1 to n नहीं जाएंगी क्योंकि हमारा इंडेक्स तो 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा 1 से हो रहा है. हाँ लेकिन जब i की वैल्यू यहाँ पहुंचेगी ना इस जगह पे then you need one comparison and swap. जब i की वैल्यू यहाँ जाएगी तो then you do not need anything to swap with, so you stop the algorithm. So the I will move to n minus 1. Okay? जी सर. Okay, great. So plus so on, we have n minus 4 plus n minus 3 plus n minus 2 plus n minus 1. So yeah, so this is it's not needed. So n minus 3 plus that. So this is the series. This is, yes, this is the series where total numbers are, the total numbers are n minus 1. Yes? 1, 2, the total numbers are n minus 1. So the total numbers here are n minus 1. If you want to add all these up, just think this smart trick. We just combine the first one with the last one and we add them together. What is the result of this pair? And That's n. Then what we do is we pair this number with the second last. What is the sum of this? n. N. And then we pair, for example, third one with the third last. What is the sum of this pair? N. And so on. So we will be having more n's here. How many n's are there? The total number of pairs. N. Yes. So we want to add n plus n plus n. How many times? Total number of pairs. If the total number of numbers are n minus 1, then the total number of pairs are n minus 1 over 2. Yes? Yes, sir. So n minus 2 over 2, these many pairs, sorry, this is n minus 1 over 2. These many pairs have to be added, and each pair has a sum n, so that's the result, which is written in this way. Yes? Yes, sir. Okay. Great. So if you want to add a sequence of numbers with, I mean, there are fancy ways to add arithmetic series and all that stuff, but this was a very simple series, so you can add this up, and that's the result. So these many comparisons, the total number of comparisons are n minus 1 into n over 2, which I can write as n square over 2 minus n over 2. Yes, these many comparisons. Yes? Yes, sir. Cost of total comparisons. That is
1 over 2. Let me write 1 over 2 into n square minus n. That is the total number of comparisons into the comparison cost, which is 0.1 microsecond. Let's say our unit is microsecond. That's our unit. Okay. Make sense? Okay. That's the total comparison cost. Okay. What's the total swapping cost? That is 1 plus 1 plus 1 n minus 1 times. So total cost of total swapping is n minus 1 static 0.01 microseconds. Yes? Yes, sir. जी सर. And so the total cost of the algorithm looks like the following. Sorry. एक मिनट पानी पी लूं फिर शुरू करते हैं दोबारा. So the total cost of the algorithm, if you see, looks like the following. 1 over 2, और अगर मैं ये 0.1 को देखूं तो that becomes 1 over 20 into n square minus n plus 1 over 100 n minus 1. Yes? Yes? जी सर. Okay. Or I can just write that as 1 over 10 into 1 over 2 n square minus n plus 1 over 100 n minus 1. Just to think that this is the cost of comparison, this is the cost of swap. Okay? Yes? जी सर. Now, a big trouble here is the following. Although this naive algorithm is really great, let's say you have a different hardware, same algorithm, and a different hardware. And let's say the new hardware, a very different hardware, is very powerful. What does it mean by it very powerful? Let's say you have a full hardware and a very powerful programming language, very fast operating system, and all that stuff. That eventually means the comparison cost in that hardware and software stack, hardware and operating system, and all the comparison cost will be smaller than 0.1, and the swapping cost will be, at the end of the day, will be smaller than 0.01. Yes? So let's say you have faster hardware, better operating system, better programming language, but the same algorithm, the same code, okay, the same logic. That means you will be having, you'll be having comparison cost as maybe 0.0001 microseconds because the hardware is really fast, and your swapping cost is, let's say, 0.00001 microseconds. Let's say. Yes, because the hardware is really powerful and you have installed the latest operating system and you're using the fastest programming language today. Okay? Okay, sir. Yes, sir. So in that hardware plus operating system plus the language has, let's say, the comparison cost. If you compare to real numbers, this is the comparison cost and this is the swapping cost. So if you run the same algorithm on the new hardware,
what you will get is the following. 1 over, in this particular case, this thing, plus 1 over maybe more zeros. Maybe I'm wrong in writing the number of zeros, but you get the idea, I guess. N minus 1. Okay? Yes? जी सर. Which is great because now the total time is really small. Actually, if you see the total time here, that is this particular hardware actually is 1,000 times faster than the original one. So yeah. So let me write this as this. So this is actually 1,000 times faster than a previous hardware. Yes? जी सर. Now the problem is, let's say somebody came up with an algorithm that is very tricky, and the algorithm has total comparisons. It has a different logic, let's say. It may not be this way, that it always find out the minimum and then swap. It has completely different logic. But in that logic, it is doing some comparisons and finally swappings, maybe in a completely different order. Okay? And let's say in that logic, the total number of comparisons are, let's say, 4 times n log n. These many comparisons. Okay? Where log is a function. Do you know, everybody know about log or not? जी सर पता. ये चीजें समझ आ रही हैं सबको? मुश्किल तो नहीं हो रही? मैं वो सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो मैंने शुरू में किया था. जी सर. जी सर. यस सर. Okay. So log, right now we are taking a log of base 2. Log के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. Just log base 2, इसको normally LG भी लिखते हैं. Log base 2 LG भी लिखते हैं. और log of, let's say, 32 base 2, that is equal to 5. यानी मैं 2 की क्या पावर लूं कि 32 आ जाए? That power is 5. Yes? जी सर. Yes, sir. So log of, let's say, 100 base 10 is equal to what? 2, sir. 2 because 10 की क्या पावर लें कि 100 आ जाए? So आप गौर से देखें, ये जो log है ना, it actually picks very large numbers and shrink them to very small numbers. Okay? Okay, sir. So for example, you pick a very large number, let's say 256. Log, LG means log base 2. And that turns out to be what? I guess 8. Yes sir. So you double this number, you add a 1 there. You double this number again, you add a 1 there. So log actually shrinks very large number to very small numbers. Okay? Okay, sir.
Okay, so let's say you came up with an algorithm that has very powerful logic, very different kind of logic, and the total number of comparisons are 4 times n log n, and the total number of swaps in that logic is, let's say, maybe you came up with swaps, maybe you do a lot of swaps, let's say 10 times n. Maybe you do a lot of swaps. Maybe you do swapping 1 times and then you swap another time. And maybe you, do a lot of the swappings a lot many times. That is the requirement of the logic. That's okay. Yes? Yes, sir. Now, if you run this particular algorithm that has this particular logic and cost on a slow hardware, let's say slow hardware, that means 1 over 10 is the cost of comparisons. And 1 over 100 is the cost of swaps. Then that's the total cost. Yes? Yes, sir. Okay. So now we want to compare this cost with this cost. Remember, that's an algorithm which has these many comparisons, and that this is the algorithm that is straightforward algorithm, and maybe a very slow. We think that that's a slow algorithm, but we are running that algorithm in a very powerful hardware and operating system and programming language stack. And this algorithm, maybe that's a tricky one and maybe has a powerful logic in it, but we are running that on an ordinary computer. Yes? Yes, sir. So let's compare them both. Let's compare them both. For what value of n? So what we are going to do is the following. So let me call this as A, and let me call this as B. So what we are going to build is the following. What is the input size, n? What is the cost in this particular setup? And what is the cost in this particular setup? Yes? So we are going to build this table. Agreed? Yes, जी sir. सर. So let's take a reasonable size of n. Let's say n is maybe, let's say, the size of the array is 100. In that case, this setup will take how much time? That's at the end of the day, that's a number. Yes? And what will be the cost at this particular time? Again, at the end of the day, that's also a number. Yes? So we want to fill this table this way. So when the input is 100, what's the value of A? What's the value of B? When the input is, let's say, 1,000, what's the value of A? What's the value of B? And so on. Let's see this. Okay? Okay, sir. For that, I'm going to write a program in Python just to show you the numbers. Let's compute these numbers interactively. Let's do it. I guess you can see my screen here. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Don't worry if you don't know Python. You can do it in any programming language. Not a big deal. Let's keep that as it is. Okay, so I have to import some packages. Let's say NumPy and P. I guess I only need that. That's for array processing, NumPy. And let's say the value of A is get A. Let's say define A, and it accepts an N. So what's the value of A? That is basically, if you remember, the value of A is
1 over 10 into 4 into n log n plus this thing. So that is 1 over 10 multiplied by n static and p naught log base 2 n n times 4. Yes? Yes, sir. Yes, sir. जी sir. Plus 1 over 100 into 400 10n. into 10n into, just keep those things as it is, 10 is static. That's the cost. Let me call this as cost C, and then we return that. Let's see. Let's test this. And F get A 100. The value is this. So far, so good. Yes. Yes, sir. Okay. Now let's write the function for getting B. B. And that is a different one. Again, 1 over 10 is as it is. This part is different. And this part is different. Yes? Yes. So this part, oh no, that is 1 over 1000 into that. And yeah, so let's write that. 1 over, let me multiply these two things together. 1 over 1000 into 1 over 10, and even this 2 also. So that becomes 1 over 20,000. Yes? जी sir. Over 20,000 into n square minus n. Yes? Yes, sir. Then we have 1 over 100. No. ये 1000 भी multiply होएगा ना? ये 1000 भी उसके साथ multiply होएगा. That will become 1 over 10,000. That's no. Sir, 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. I guess 5 zeros. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Into n minus 1. N minus 1. So that's our C, and we want to return the C. Sir, आपने 4 लिखे हैं. 4 लिखे हैं, 5 नहीं है. अच्छा ठीक है, ये 5 कर लेते हैं. सही है. And now, so let's print this. That's quite small amount of time. These are microseconds, by the way. These many microseconds and these many microseconds. Yes? Yes, जी sir. sir. Okay, so what we do next is the following. What we do is the following. Let's build a table, or maybe we plot the running times. That is for plotting. And let me show you what I'm going to do for X, for N in range. Let's say we start from 100, maybe we start from 100 and we go to, let's say, this input, and we take a jump of, let's say, every time we take a jump of, let's say, 100. This is the loop. I'm going to write this loop, and this says the following. जैसे आप C++ में लिखते हैं ना, I starts from 100,
This is where it should go, and this is the step size. I plus equals to 100. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैंने n की जगह पे ये यूज किया है n. Okay, so that's our n. So what we do is say okay, A is empty, B is empty. So what we do is the following: A dot append, list में append करता जाएगा f get A on this n. एक्सक्यूज मी सर, B dot G. अरे हम जी, पूरा जी। कोर्स ही पाइथन में पढ़ेंगे सर? नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेते हैं। आपको मुश्किल हो रही है पाइथन में? नहीं है, नो सर। आइडिया नहीं है। नहीं, अगर पाइथन में पढ़ना चाहते हैं तो पाइथन में पढ़ लेंगे। आई मीन जो भी हमने कोड लिखना होगा वो पाइथन में लिख लेंगे। और अगर आप पाइथन का क्विक ट्यूटोरियल चाह रहे हैं तो अगर आप यूट्यूब पे जाएं और वहां पे लिखें पाइथन फॉर डेटा साइंस, यहां पे ये 12 घंटे की एक वीडियो है, ये मेरी अपनी है। ये फ्री कोड कैंप ने इसको किया हुआ है वो अपलोड। ये मैंने पिछले साल बनाई थी, 1 साल पहले। So this is available on YouTube. So you can just go through the video. That's 12 hours and you will be very good in Python if you want. Okay? Okay, sir. Python for data science, यही लिखना है आपने। फ्री कोड कैंप ने इसको पब्लिश किया है, ये मेरी वीडियो है और ये अवेलेबल है। अगर आप क्विक टूर चाहते हैं, यानी इतना 12 घंटे वेट नहीं करना चाहते, क्विक चाहते हैं, तो देयर इज अनदर लिंक, AI साइंसेस। अगर आप AI साइंसेस पे जाएं, यहाँ पे ये सिंबल है AI साइंसेस का। यहाँ पे अगर आप वीडियोस में जाएं तो यहाँ पे भी मैंने पाइथन के कुछ ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। लेट मी, बाय द वे ये सारी वीडियोस मेरी अपनी ही हैं, मोस्ट ऑफ दीज। Python, mastering Python for data processing. Yeah, mastering Python for data science. सर कोई अगर आप ये फ्रेमवर्क सर को यूज किया या सिर्फ बेसिक्स ही है ये सारी? फ्रेमवर्क नहीं है इसमें कोई। इसमें फ्रेमवर्क्स नहीं होते, इसमें पैकेजेस होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो वो पैकेजेस हमने numpy वगैरह यूज किए हैं जो डेटा साइंस के लिए रिक्वायर्ड है। नहीं सर, तो अगर आप जैसे क्विक Django, फ्लास्क वगैरह होते हैं जो फ्रेमवर्क। Django डेटाबेस वगैरह के लिए चाहिए, वो हम यूज नहीं करते। यानी डेटाबेस वगैरह के लिए हमें जो बिग डेटा के लिए चाहिए होता है वो स्पार्क होता है, उस पर हम काम करते हैं, पाई स्पार्क के ऊपर। जी ठीक है सर। ठीक है। पांडास पे हमने काम किया हुआ काफी, लेकिन पांडा फ्रेमवर्क नहीं है, इट्स अ पैकेज। यानी डेटाबेस हैंडलिंग के लिए बड़ा जबरदस्त पैकेज है ये पांडास, फाइल हैंडलिंग वगैरह के लिए ये यूज हुआ है। ये इस वीडियो में भी है, array processing and everything. So if you want a quick tour, you can go to Mastering Python for Data Science Part 1 and Part 2. That's almost 3 hours. That's a summary of those 12 hours. If you want, that's your choice. You can do that in any programming language. This is not required. जी sir. Okay? Okay. So now F get B on this N. And here we have these lists, A and B. Okay. So now after that, what we do is we said, okay, X is P dot range of A. Let me show you what I'm doing. Let me show you that, and X.
So till now, you can see that actually I should mention the colors. Let's say blue for A, and let's say red for B. So blue color is for algorithm A. Okay. जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जा रहा है, और यहां पे मैंने इनपुट साइज जो है ना, ये इनपुट साइज मैंने रखा हुआ है 0 से, यानी ये इनपुट साइज अगर बिल्कुल इनपुट साइज ही आपको चाहिए तो वो इनपुट साइज भी ले सकते हैं आप उस पे, एंड यानी लेट मी हैव x as well, इनपुट साइज को भी ले लेते हैं. Then we do not need this. These are the input sizes. You can see that as the input is growing, this algorithm A is obviously taking many more microseconds. Algorithm B in the start was taking very small amount of microseconds, but as the input is growing, it is taking large amount of microseconds. Yes? Yes, sir. Let's move, for example, to more input size. Let's say, let's increase the input size and see what happens. And let's take that jump to a jump of 1,000. Oh, what happens? What happened? Sir, blue वाला अच्छा हो गया. Blue वाला अच्छा हो गया. Let me show you that with, let's say, smaller input, relatively smaller input. See what happens. You see this? Yes, sir. यार एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये ना अजान हो रही, अजान होले फिर उसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं इसको. Gee, so you might be noticing that as the input is growing, becoming larger and larger, the faster hardware with a very naive or nonsense algorithm, even the hardware is really fast, that is not, the fastness of the hardware is not helping at all. In start, it is really good. If the inputs are small, faster hardware is really great. But as long as the input is growing larger and larger, it seems that the hardware is none of a big use. Are you getting this point?
जी सर। जी and सर। this deviation will become larger and larger as you go to further higher inputs. As you can see here, I mean, no match. और होगा क्या अगर आप बिल्फर्स और बेहतर हार्डवेयर ले आए, और ज्यादा बेहतर हार्डवेयर ले आए, तो ये सी और एस की वैल्यूज मजीद छोटी होंगी, ऐसा ही है? जी सर। तो ये टेबल जब आप फिल करेंगे तो यही जो पॉइंट है ये यहां की बजाय थोड़ा सा आगे हो जाएगा, लेकिन ये रेड कर्व जो है ये इवेंचुअली बहुत बुरी हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन बेटे ये है कि चाहे आप हार्डवेयर को जितना मर्जी तेज कर लें, हार्डवेयर की तेजी जो है उससे मुराद क्या है? कांस्टेंट स्पीड अप। कांस्टेंट स्पीड अप है ना, एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स के दूसरे सेटअप से ये इतना तेज है, लेकिन ये जितना भी तेज है दैट इज अ फिक्स्ड। लेकिन ये 1000 फिक्स नंबर नहीं आ रही, कट कट। यस जी सर। आवाज कोई आ रही? अब आ रही? जी सर अब आ रही है। जी यार ये इंटरनेट वगैरह के मसले होंगे, वैसे तो ये आप देख रहे होंगे मैं बड़ा बेहतरीन स्टूडियो माइक यूज कर रहा हूं और आवाज का मसला तो नहीं होना चाहिए, ये लेकिन ना वो इंटरनेट कई दफा बीच में वो फिर मसले हो जाते हैं। ठीक है, जी सर। ओके सर। so let me complete my argument and then we will finish this class. Let me just focus. देखें, एक हार्डवेयर सेटअप या हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज सेटअप और दूसरा सेटअप, दोनों में जो स्पीड डिफरेंस है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, लेट्स से 1000 टाइम फास्टर देन द अदर। लेकिन एक लॉजिक और दूसरी लॉजिक, इन दोनों में जो फर्क है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन दिस लॉजिक, number of comparisons in this logic, the total number of comparisons, they are not fixed, they depend upon n. फिक्स नहीं है, इनपुट साइज बड़ा होता जाएगा तो एक एल्गोरिदम के टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस दूसरे एल्गोरिदम के टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन से बहुत डिफरेंट होते जाएंगे। ये फिक्स डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हैं? जी सर। सो जैसे जैसे इनपुट बढ़ती चली जाएगी, ये जो कंपैरिजंस हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजंस, ये इतने ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू दीज नंबर ऑफ कंपैरिजंस, कि ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि एक कंपैरिजन चाहे जितना मर्जी तेजी से परफॉर्म हो, योर नंबर ऑफ कंपैरिजंस विल बी सो लार्ज दैट योर फास्टर हार्डवेयर विल नॉट एबल टू हेल्प। क्लियर है? जी सर। और जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जाएगी, आपका हार्डवेयर तो एक फिक्स्ड स्पीड अप दे सकता है कि यार एक कंपैरिजन मैं बड़ी जल्दी कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास करोड़ों कंपैरिजंस ले आओ, अब मैं क्या करूं? एक कंपैरिजन मैं बड़ी जल्दी कर दूंगा, दूसरे कंप्यूटर की निस्बत में इंतहाई तेजी से एक कंपैरिजन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम मेरे पास 10 करोड़ कंपैरिजन ले आए हो कि जल्दी करके दो, 10 करोड़ का कंपैरिजन करने में टाइम लगेगा। वो जो दूसरा कंप्यूटर है वो एक कंपैरिजन बड़ा स्लो करता है, लेकिन वो टोटल कंपैरिजन जो है उसने 100 करने हैं, उसका एल्गोरिदम ऐसा शानदार है कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर जस्ट 100। अब एक कंपैरिजन थोड़ा सा लेट भी हो, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर स्मॉल। मेरी बात समझ में आई? जी सर। सो याद रखिए, हार्डवेयर को जितना मर्जी स्पीड अप कर लें, दैट्स अ फिक्स स्पीड अप। जब आपकी इनपुट बढ़ती है तो जो आपका एल्गोरिदम होता है उसमें जो नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्वैप्स, नंबर ऑफ कंपैरिजंस एंड ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक, और ये डिपेंड करते हैं कि इनपुट का साइज कितना था। अगर आप केयरलेस लॉजिक लिखेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस इतने ज्यादा हो जाएंगे, जैसे जैसे इनपुट बढ़ती चली जाएगी ये बेसिक ऑपरेशंस एक्सप्लोड होना शुरू हो जाएंगे। अब आपका तेज हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकेगा वहां पे, चाहे जितना मर्जी तेज ले लें।
जैसे इनपुट बढ़ेगी यू आर जस्ट डंप। अब क्या करें, अब इनपुट थोड़ी सी और बढ़ेगी, यू आर जस्ट डंप। आज आपने एक शहर में अपना सेल सेंटर कायम किया, कल आप 5 शहरों में अपने सेल सेंटर कायम करते हैं, उसके बाद आप पूरी दुनिया में अपने सेल सेंटर कायम करके, तो आपका डेटा तो डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। आपकी जो अरे का साइज है वो बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा। हार्डवेयर इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो चूंकि बेटे इनपुट ग्रो कर रही है, चूंकि इनपुट का साइज बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है, वी नीड स्किल सेट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। अगर हार्डवेयर भी अच्छा मिल जाए दैट्स अ प्लस, लेकिन अगर हार्डवेयर अच्छा मिल जाए दैट्स अ प्लस, लेकिन हार्डवेयर का अच्छा होना दैट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेक सेंस? जी सर। We need to learn the skill of analyzing a program, writing a careful program, and counting how much time will it take and improving it. We need to do this because the input is getting more and more day by day. I guess you get my point. Yes, sir. Okay, so that's it for today. Let's meet on Thursday, inshallah. I will ask afternoon section to join you on 11:30, and we'll be having a combined session, inshallah. Anything else? सर ये जो नोट्स आपने बनाए शेयर करेंगे? नोटपैड की क्या? सर ये जो भी आपने सारा लिखा है ये शेयर कर देंगे हमारे साथ? ये पूरी वीडियो बेटा शेयर्ड है आपके साथ, पूरी वीडियो शेयर्ड है। ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो ऐसे ही चल रही हो, बल्कि इससे भी अच्छे व्यू में चल रही होगी। ये वीडियो देखें जरा, ये अभी थोड़ी देर बाद आपको इसका ईमेल आ जाएगा कि यू कैन डाउनलोड द वीडियो और व्यू द वीडियो व्हाटएवर। तो ये वीडियो आपको अवेलेबल होगी, ये रिकॉर्डेड है सारा कुछ। ठीक है? ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।